Hello, wonderful learners. Once again, your learning buddy Aprachita is here with your Environmental Studies Class 4 by Acknowledge Series Amit Publishing House. And children, today we are going to do the last chapter of our EVS, that is chapter number 17, Waste and its Disposal. Waste, जो चीज़ें हमारे ज़रूरत की नहीं होती हैं, the things which we throw away, that are the waste things, वही waste कहलाता है. और इसका disposal कैसे करना चाहिए, how to dispose it of, that we will see in this chapter today. So here we start the chapter. Garbage. Garbage is any material that is of no use and can be thrown away as waste. गार्बेज किसे कहते हैं? वो मटेरियल जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता है और हम उसे फेंक देते हैं. दैट कैन बी थ्रोन अवे एज वेस्ट. बिल्कुल वेस्ट होता है वो और वी थ्रो अवे दैट. नाउ हियर मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट यू थ्रो इन द गार्बेज एट होम एंड इन स्कूल. अब स्कूल जब आप जाते हैं वहाँ यू हैव डस्टबिन्स इन योर क्लासरूम्स एंड देयर यू थ्रो द गार्बेज. अब क्या क्या गार्बेज होता है वहाँ पे, क्या क्या वेस्ट मटेरियल होता है जो आप डस्टबिन में डालते हैं, या घर पे कौन सा मटेरियल ऐसा है जो वेस्ट है दैट यू विच यू थ्रो इन द बिन, दैट यू हैव टू लिस्ट आउट. नाउ वेस्ट रेफर्स टू एनीथिंग दैट इज यूजलेस और अनवांटेड. जो यूजलेस होता है और जो हमें नहीं चाहिए होता, दैट इज वेस्ट. Every home produces a large amount of waste every day. हर घर से बहुत बड़े अमाउंट में वेस्ट मटेरियल निकलता है. Factories, offices, schools, colleges, markets, hospitals and hotels also produce a large quantity of waste. इन सब जगहों पे भी डेली बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है. Waste affects our environment. Yes. It pollutes the land, water and air. यही वेस्ट जो है ये हमारे एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करता है और पोल्यूट करता है. The surroundings look dirty and ugly. अब जगह जगह अगर वेस्ट पड़ा हुआ होता है तो ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है और वो बहुत गंदा भी लगता है देखने में. Thus, mosquitoes and household pets like rats breed in the garbage. और इसी गार्बेज से मस्कीटोज भी पैदा होते हैं और रैट्स भी ब्रीड करते हैं यहाँ पे. दे स्प्रेड डिजीजेस लाइक डायरिया, टाइफाइड एंड डिसेंट्री. ये सब डिजीजेस इन्हीं चीज़ों से फैलती है, इन्हीं वेस्ट से फैलती है. ड्रेन्स गेट चोक्ड एंड गिव ऑफ अ फाउल स्मेल. जब ड्रेन्स चोक हो जाते हैं इन गार्बेज की वजह से तो उसमें से स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है, फाउल स्मेल. So it is very important to dispose of the garbage properly. इसलिए ये जो garbage है जो कि हमारा unwanted material है, इसको dispose of करना, इसको फेंकना, एक proper तरीके से dispose of करने की बहुत ज़रूरत है. Now types of waste. What are the different types of waste? Plant and animal waste like vegetable peels and excreta rot easily and mix with soil. Now, plants and animal waste like vegetable peels and excreta rot easily. ये rot मतलब सड़ जाना. ये vegetable peels और excreta जो होते हैं ये rot हो जाते हैं आसानी से और soil में mix हो जाते हैं. They become a part of the soil and can be used by the plants. अब ये soil में mix हो जाते हैं और plants use कर लेते हैं इस soil को. इसमें से nutrition जो होता है वो plants ले लेते हैं. These are called biodegradable waste. ये biodegradable waste क्यों है? क्योंकि ये अपने आप ही rot होने के बाद mix हो जाते हैं soil में. Fine? But waste like plastic, glass, metal, chemicals and polythene do not rot. अब ये जो materials हैं ये rot नहीं होते. Rot मतलब सड़ना. ये खराब नहीं होते, सड़ते नहीं हैं. प्लास्टिक नहीं, आप रख दीजिए, आप सॉइल में इसको दबा दीजिए, यू जस्ट कीप इट इन द सॉइल एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑल्सो व्हेन यू टेक इट आउट इट विल बी द सेम. ग्लास, मेटल, ये सब नहीं मिक्सअप होते.
These are called non-biodegradable waste. They stay in the soil for a very long time and pollute the soil. वो बहुत लंबे टाइम तक सॉइल में रह सकते हैं और सॉइल को गंदा करते हैं. When domestic animals like cows eat any of these, they fall sick and die. अभी जो पॉलीथीन्स हैं या प्लास्टिक्स हैं, अगर कोई डोमेस्टिक एनिमल जैसे काऊ है वो ग्रास खाते खाते इसको भी साथ में खा लेता है तो वो बीमार पड़ जाता है एंड दे डाई ऑल्सो. Now see here children, there are two dustbins here. One is for biodegradable waste and the other one is for non-biodegradable waste. Separate dustbins for biodegradable and non-biodegradable waste. We must separate the biodegradable and non-biodegradable waste before we dispose of garbage. Now children, what happens in all the big cities, this is being applied, this thing is being followed. उनका जब गार्बेज वो डिस्पोज ऑफ करते हैं तो बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो वेस्ट एक अलग डस्टबिन में रहता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी एक अलग डस्टबिन में रखते हैं. And we all should also follow this. Disposal of waste. Now how to dispose of this waste? We must not throw garbage in open areas outside our house. ऐसे ही ले जाके गार्बेज को कूड़े को कहीं ओपन एरिया में नहीं फेंकना चाहिए. Household garbage should be collected in a covered dustbin and disposed of at a proper dumping place. जो घर के गार्बेज होता है घर का उसको एक तो कवर्ड डस्टबिन में रखना चाहिए प्लस उसको डिस्पोज ऑफ भी एक प्रॉपर, अगर डंपिंग एरिया है कोई जहाँ पे गार्बेज डंप होता है डाला जाता है वहीं जाके डालना चाहिए. Waste from garbage bins dumped in a landfill. देखिए लैंडफिल बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है, उसमें सारा वेस्ट डंप हो रहा है. Now let's find out parts of electronic goods such as computers, mobile phones, television, etc. are called electronic waste or e-waste. This type of waste has poisonous elements such as mercury and lead in it. Thus, if it is not disposed of properly, it can harm the environment. अब ये जो ई गार्बेज होता है, जो कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं, फोन्स के, मोबाइल फोन्स के, देन टेलीविजन के, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं और ये पॉइजनस एलिमेंट्स, दे जस्ट गिव आउट पॉइजनस एलिमेंट्स एंड दैट आर मर्क्यूरी और लेड निकलता है इसमें से, तो ये बहुत हार्मफुल होता है. इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द environment. So इनको properly dispose of करना चाहिए. Open dumping. Waste is loaded in trucks. It is then taken far away from the town or city and dumped in the open. जो waste है सारा garbage वो एक ट्रक में डंप किया जाता है, ट्रक में लोड किया जाता है और सिटी या टाउन से बहुत दूर एक जगह पे जाके इसको डंप किया जाता है, डाला जाता है ओपन में. दिस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट. क्योंकि ये ओपन में सारा डंप होता है तो ये जो ओपन में जितना भी गार्बेज होता है सब एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है. लैंडफिल्स. समटाइम्स deep ditches are dug in the ground and the garbage is dumped in them. अब कभी कभी क्या होता है, बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं और उसमें गार्बेज को लाके डाला जाता है. When filled up, these ditches are covered with soil. और जब वो भर जाते हैं ये गड्ढे तो इनको सॉइल से कवर कर दिया जाता है. Now burning. The other method is burning. Waste is first collected at one place, it is then burnt. And one more method is compost pits. In villages, some people dig a pit in the ground and dump their household waste in it. After some time, this waste turns into manure. It is used by the farmers in their fields. अभी villages में क्या करते हैं लोग, बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोदते हैं, पिट खोदते हैं ग्राउंड में और जितना भी घर का कूड़ा होता है वो सब उसमें डंप कर देते हैं. थोड़े दिनों बाद ये खाद में चेंज हो जाता है ये सारा
जो वेस्ट है इट टर्न्स इनटू मैन्योर, खाद, और फिर ये फार्मर्स इसको ले जाके अपने फील्ड्स में डाल देते हैं। दिस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल इज नोन एज कंपोस्टिंग। इसको कंपोस्टिंग कहते हैं। इट इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ डिस्पोजिंग डिग्रेडेबल वेस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। Now, there are three important things that need to be practiced to control the problem of waste disposal. These are reduce, reuse, and recycle. 3 R's are to be remembered. Reduce, reuse, and recycle. Reduce. What is reduce? If we reduce the amount of garbage we produce, then we don't have to worry about disposing it. We should think of ways to reduce waste while we shop, work and play. अब हम अगर अपना amount of garbage जो है, जो कूड़ा है, उसको reduce कर दें, उसका amount, कम garbage निकले हमारे घर से, then उसको dispose of करने की कोई चिंता नहीं होती है। और हमें सोचना चाहिए, waste तरीके सोचने चाहिए कि कैसे reduce कर सकते हैं। There are many ways to reduce waste. We can reduce waste by reducing the number of things we use, both natural as well as energy resources. और इसको reduce करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम क्या करें, number of things जो भी हम naturally use करते हैं, energy sources use करते हैं, उसको हम कम से कम use करें. Now let's find out. An anti-littering and anti-plastic bag campaign was started in New Delhi under the Bhagidari program. A plastic bag collection was organized and about 5,000 kg of used plastic bags were collected. एक प्रोग्राम चलाया गया था न्यू दिल्ली में भागीदारी प्रोग्राम के नाम से, जिसमें कि प्लास्टिक बैग्स का कलेक्शन किया गया था और 5,000 किलो used plastic bags कलेक्ट किए गए थे. Now children, we should buy goods that have less packaging. अब हमें वैसे चीज़ें खरीदनी चाहिए जिसमें कि पैकेजिंग कम से कम यूज़ हुई हो, क्योंकि जितना हम पैकेजिंग खोलेंगे उतना कूड़ा ज़्यादा होगा, पेपर ज़्यादा निकलेगा उतना. We should buy goods that are durable and long lasting. ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए जो कि बहुत लंबे टाइम तक चले, ये नहीं कि हमें बार बार उसको चेंज करना पड़े. बार बार चेंज करेंगे तो बार बार हम उसको वेस्ट बना के फेंक देंगे. We should eat fresh food and not packaged food. We must carry a cloth bag while shopping. एक cloth bag carry करना चाहिए हमें जब हम shopping के लिए जाते हैं, rather than polythenes or plastic bags. We must only buy things that we need. हमें extra चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं खरीदना चाहिए कि हम घर जाके उसको यूज़ ना करें, उसको वेस्ट में डाल दें. Now reuse, ये तो हो गया reduce. Now how to reuse? We can find new uses for things that we generally throw away. कुछ चीज़ें हम बिना देखे ही ऐसे फेंक देते हैं, लेकिन उनको हम फिर से reuse कर सकते हैं. We can reuse plastic bottles, jars, containers and glass. प्लास्टिक की जितनी भी बॉटल्स हैं, जार्स हैं, कंटेनर्स हैं, इनको हम रीयूज कर सकते हैं. यूज स्टील और प्लास्टिक लंच बॉक्सेस दैट कैन बी वॉश्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग एल्यूमिनियम फॉइल. एल्यूमिनियम फॉइल यूज ना करके हमें प्लास्टिक या स्टील के लंच बॉक्सेस यूज करने चाहिए, जिनको हम धो के बार बार साफ करके उसे यूज कर सकते हैं. वी कैन टेयर ओल्ड क्लॉथ्स एंड यूज देम एज नैपकिन्स. नैपकिन्स, पुराने क्लॉथ से हम नैपकिन्स बना सकते हैं. We can make art and craft material from old paper, cartons, etc. We can reuse envelopes and gift paper. जो gift paper wrapped होके आते हैं, वो अगर अच्छे हैं तो उनका हम reuse कर सकते हैं फिर से किसी gift को wrap करने के लिए. We can use cloth napkins, handkerchiefs or hand towels instead of paper tissue and paper napkins. पेपर टिश्यू, पेपर नैपकिन्स की जगह हमें क्लॉथ नैपकिन्स यूज करने चाहिए, जिससे कि हम दोबारा से वॉश कर सकें. एंड नाउ वी कम टू रिसाइकल. Recycling is the process of converting used items into raw materials and making new products.
रिसाइकलिंग क्या प्रोसेस है? इस प्रोसेस में हम यूज्ड आइटम्स को कन्वर्ट कर देते हैं रॉ मटेरियल्स में और उससे फिर से एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं. In order to recycle, we need to separate waste into things that decompose and those that don't decompose. वही डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग अलग करना है. जो डिकम्पोज हो जाते हैं उनको अलग डिस्पोज करना है और जो डिकम्पोज नहीं होते उनको अलग रखना है. फाइन. जो डिकम्पोज हो जाते हैं उसी से हम दोबारा से उसका रॉ मटेरियल बना के और फिर से एक नया प्रोडक्ट बन सकता है उससे. सो you have understood the 3 R's: reduce, reuse and recycle. So now children, the testing time, whatever you have read here, what are the 3 R's? The 3 R's are, अभी पढ़ा हमने, याद है आपको? क्या है वो? Reduce, it's reduce, reuse and recycle. Okay? What is composting? In villages, people dig big pits and throw the household garbage, household waste in that pit. And after some time, that garbage, those waste, they turn into manure, and then the farmers use this manure in their fields. This process is known as composting. Now tick the correct option. Dash is biodegradable. Vegetable peels, glass, plastic. कौन सा biodegradable है जो अपने आप फिर से मैन्योर उसमें टर्न हो जाता है, रॉट होके? वेजिटेबल पील्स सॉइल में मिक्स हो जाता है. दिस bin is used to throw non biodegradable waste. हमने देखा था एक ग्रीन कलर का था, एक ब्लू कलर का था. सो ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, येलो. ब्लू कलर bin is used to throw non biodegradable waste और green color use होता है biodegradable waste के लिए. This place produce toxic waste. Schools, industries, villages. Industries produce toxic waste. People in these areas produce more waste. Rural, urban or farm. In urban areas, people produce more waste. This means to treat waste to get materials that can be reused. Recycle, reduce or reuse. This means to treat waste to get materials that can be reused. So recycle, it's recycle. Now, what according to you is the waste generated by? Which type of waste is generated by this teacher, doctor, tailor, mechanic, artist, shopkeeper? So, according to you, the teacher, which type of waste a teacher generates? So, children, a teacher generates which type of waste? The paper is generated. Mostly the teachers, they use papers. Okay? The new papers, the notebooks, all the papers are there. So, is it biodegradable or degradable? Is it biodegradable or non-biodegradable? So, paper is degradable, biodegradable. Doctor uses different types of things, the doctors, but there they are non-biodegradable also, and the doctors, they produce non-biodegradable. A tailor produces biodegradable waste, the cloths, the threads and all. These are biodegradable. A mechanic has metal tools and the oil and all. These are non-biodegradable.
biodegradable. An artist uses canvas, paper, the colors are there. So yes, they are biodegradable. And the shopkeeper the shopkeeper has the polythene bags also, the plastic covers also, so they are non-biodegradable. They are non-biodegradable waste. Okay, so children, now let's do the fill in the blanks. Waste effects are what? अगर वेस्ट बाहर चारों तरफ पड़ा हुआ है तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है और उससे हमारे हेल्थ को भी इफेक्ट करता है. सो वेस्ट इफेक्ट्स आर हेल्थ. द डिचेस आर कवर्ड विद, जो डिचेस जिसमें गार्बेज डाला जाता है, दे आर कवर्ड विद सॉइल. ओके, दे आर कवर्ड विद सॉइल. वी शुड बाय गुड्स दैट आर, कैसे गुड्स खरीदने चाहिए हमें? दैट आर ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग. एंड द नेक्स्ट वन इज वी मस्ट ओनली बाय थिंग्स दैट वी, जो हमें जरूरत है वही चीजें हमें खरीदनी चाहिए, दैट वी नीड. वी कैन रीयूज डैश एंड डैश पेपर. हम क्या रीयूज कर सकते हैं? वी कैन रीयूज envelopes and gift paper. Okay, now coming to the true and false, write T for true and F for false. Any material that is of no use is called waste. Yes, this is true. Dumping of garbage pollutes the environment. Yes, very true. Vegetable peels and paper are non-biodegradable waste. This is false. They are biodegradable waste. For the disposal of biodegradable waste, compost pits are also used. Yes, very true. Things made of glass, metal and chemicals can be recycled to make new things. Can we recycle glass, metal and chemicals, children? No. So this is false. It cannot be reused. Now children, some question answers to do. What is a garbage? Any waste material, any material which is waste and of no use is known as the garbage, which we throw away. That is the garbage. What is the difference between biodegradable and non-biodegradable waste? The biodegradable waste are those waste which, when mixed up with which after some time rot out and mix up in the soil. But non-biodegradable waste are those waste such as plastic, metals, glass, which do not rot and they don't mix in the soil. They just for a very long time are as it is in the soil and they harm the soil. Name the different methods of waste disposal. अभी waste dispose of करने के हमने बहुत सारे methods पढ़े, तो कौन कौन से थे वो? One was open dumping, then landfill, and one was burning, and the other one was compost pit. Fine? And what are the 3 R's? The 3 R's are reduce, reuse, and recycle. These are the 3 R's. How do they help in waste management? They control
by using these 3 R's, we can manage the waste. The waste management can be controlled. The waste which is scattered over here and there, that can be controlled by using these 3 R's. Now, activity time, children. Why should you say no to plastic bags? The plastic bags they are the non-biodegradable materials, and they don't mix up in the soil, they don't rot, and they just stay in the soil as it is for a very long time. And if they are eaten by the cows along with the grass, the cows, they fall ill and they can die also. So this is very harmful. The plastic bags are very harmful, and we should say no to these plastic bags. Instead, we should use the cloth bags. Write a short paragraph about importance of recycling and reusing waste and read it out in the class. अभी आपने 3 R's का यूज पढ़ा, reduce, reuse and recycle. तो recycling क्या होता है and reusing क्या होता है? Just read again in the chapter. फिर से पढ़िएगा इसको 3 R's को, and from there you can write a short paragraph on it. What are the different things we use in our day-to-day life that we can recycle? हम कौन सी चीजें recycle कर सकते हैं? Papers that we use, जो papers हम इतने use करते हैं, that can be recycled, and the cloth, the papers, the vegetable peels, daily we have some vegetable fruits or vegetable peels. These all things can be recycled. Why is it important to have good garbage disposal system? It is very important to have good garbage disposal system, because if the garbage is thrown all over here and there, they spoil the environment, they pollute the environment, and due to that, the human beings are also affected, and we can have some major diseases. We can suffer from some major diseases like typhoid, diarrhea, dysentery, and this disposal system, garbage disposal system. That is why it is very important to have a good disposal system. Collect pictures of biodegradable and non-biodegradable substances and paste them in your scrapbook. अपनी scrapbook में क्या करना है आपको? कुछ biodegradable चीजें और कुछ non-biodegradable जो चीजें हैं, उनके pictures collect करके आपको paste करना है, and then label the substance and make the categories clearly. उनको नाम देना है, उनको क्या करना है? आपको मार्क लेबल करना है. लेबल करने के बाद उसमें लिखना है कि वो बायोडिग्रेडेबल है या डिग्रेडेबल है. ओके, सॉरी, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, that you have to label. So children, I hope you have understood very well about the waste management, how to take care of these garbage, where to throw the garbages, how to without polluting the environment, how these waste can be reused, recycled, and what all things we should use, the things which is necessary, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही खरीदना चाहिए. इतना सारा सामान नहीं खरीदना चाहिए जिससे कि इतना ज़्यादा वेस्ट आपका हो. आपके घर में भी आपको रिड्यूस करना चाहिए अपना वेस्ट. So children, this was all in your EVS. I hope you have enjoyed the journey of your environmental science studies with me, and I hope you will again go through all the lessons, because this was the last lesson of your environmental studies. Now children, this is your job to read the lessons again, go through all the chapters again very thoroughly so that you understand more. Okay, so stay blessed, stay happy, and stay excited, and keep learning, because without learning you will not be able to recall what all you have learned till now. So children, stay happy and bye.